वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। इससे पहले जैसे कि हम डिस्कस किए थे सोलर एनर्जी के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि सोलर एनर्जी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ओके कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है और रेडिएशन का कैसे फ्लो होता है। सोलर एनर्जी मेन काम क्या होता है, जो सन रेडिएशंस होती है, रेडिएशन एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में कैसे अरेंज होते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में अरेंज होती है, या एनर्जी कह सकते हैं क्वांटाइज होती है। जो क्वांटाइज एक एक यूनिट जो होती है, एक एक यूनिट क्वांटाइजेशन के बाद होती है, तो वो ईच एंड एवरी सारी यूनिट्स कौन सी होती हैं, फोटॉन्स होती है, ठीक है। एंड फोटॉन्स भी quantized with the help of formula h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency associated to the radiation rays. Now, in this lecture, I will describe the characteristic of solar cell. Before to discuss the characteristic of solar cell, here, what is the basic structure behind the solar cell? Actually, you know, here the solar energy source in the form of sun. Sun gives the radiation energy. Okay. Here sun gives the radiation energy. Now, then what happens? Radiation transfers in forward direction in the form of photons. Okay. Here, sun rays fall down. And what happens? Electron as well as hole pairs takes place. This is the base, this is the rear contact, plus terminal, minus terminal, and this is the external loop. This is the emitter, front contact, and well as this is the anti-reflection coating. Now, what are the key parameters behind the solar panel? First one is open circuit voltage, that is VOC, short circuit current, IC, shunt resistance, series resistance, internal quantum efficiency, as well as external quantum efficiency. These are the main characteristics for any solar panel, and solar panel contributed the energy associated in the form of solar. Further, this solar energy may be this solar energy is converted into the electrical energy, and according to the demand, this would be supplied on the help of distribution line for commercial purpose as well as domestic purpose. Here you can see the solar cell as a diode. Now, a solar cell is a diode, means it's having the two terminals, and hence the fourth curve of a solar cell under dark conditions will look similar to that of time. When irradiated, the photons interact with the material, generate electrons towards space. एकदम सेम वैसे जैसे कि डायोड में होता है, उसी तरीके से सोलर सेल में भी ये कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है। You can see in this diagram what happens. Voltage increases forward current increases in session. And this is the breakdown voltage. And here same diagram for dark current and under illumination. Now, what is the standard test conditions? The standard test conditions is to be determined at 25 degrees centigrade. VI characteristic behind the solar energy in such a way. If the voltage is plotted on y-axis as 1 volt, y
0.5 in such a way. Okay. This is the minus. And on y-axis, electric current is plotted minus 20 ampere micro ampere per centimeter square. It means this is the current density. Already you know electric current is a scalar quantity, while the electric density is vector quantity. So the vector quantity is represented on y-axis. The y-axis value increases in the ascending order at this point the current density having a numerical value in the form of minus 20, then minus 20 goes up to minus 15, then minus 10, minus 5, 0, 5, 10. It means as you will go in upward direction, then you will get the positive value of current density. Now, here a red colored line and another is dark colored line. Dark black colored line is represented to dark current and the red colored line is represented to under illumination. Now what happens? This is the maximum photo current here. In such a way it increases for short circuit current. For open circuit current, in this way dark current increases. Now how the solar simulator maybe visualizes, and that this one is a guide here. This is the work platform in the touch pad, something like that. Now here I would like to tell you about some contents regarding the solar cell. Before to discuss this point, I would like to repeat the one term that Unit 2 as well as Unit 3 and the most of the chapters are related to the non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources को पढ़ना है क्योंकि present time में इसकी बहुत डिमांड है और on the present time demand every country wants to exceeds its non-conventional resources or renewable resources. Now, here are some contents related to solar power panels, and also we will discuss about these points like firstly we would start at introduction. The introduction involves the principle of solar cell, principle of solar cell forms. Construction of solar cell, already told you about the construction of solar cell. Working of solar cells, you know the radiation released on the solar plates in the form of photons, and those photons further will be converted in the form of electricity. The types of solar cells already discussed. There are the two types of active as well as passive cells. Generation of solar cell: first generation, second generation, and last one is third generation. In such a way, the total type of generation for the solar cell are first, second, third, and generation respectively. After discussion of हम ये भी जानेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है सोलर सेल में, भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे. Firstly, I would like to tell you about the introductory portion for once again for the solar cell. Basically, solar cell is a photovoltaic cell, voltaic device, जो कि कन्वर्ट किसको करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. तो कोई भी सेल होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है. यहाँ पे जो सोलर सेल है वो फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है. और किस पर वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक. नाउ व्हाट आर द फोटोवोल्टाइक डिवाइस?
generation of voltage across the PN junction in a semiconductor due to the absorption of light radiation is called photovoltaic effect. फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है? मतलब फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो पीएन जंक्शन लाइन जो इनसाइड द सेमीकंडक्टर होता है, इनसाइड द सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो किसके कारण होता है? लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण। लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है लेंस ऑब्जर्वर, और वो जो होता है सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन के जॉइंट में क्या होता है? वोल्टेज जनरेट होता है। इन सच अ वे द टोटल सोलर एनर्जी could be converted in the form of electricity. That's why the main principle behind the solar energy generation, that is photovoltaic principle. And those devices follows the photovoltaic principle. The devices come under the category of photovoltaic device. What does the principle of solar cell says? Here you can see the diagram. A device which use a photovoltaic principle, the device is known as photovoltaic device, and the solar cell is a type of photovoltaic device. Now, the solar cell are based on the principle of photovoltaic effect. And what is the photovoltaic effect? Basically, the photovoltaic effect is the photo generation of charge carriers in a light absorbing material and absorption of light radiation. फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है? फोटॉन्स से जो एनर्जी हमको मिलती है सोलर पैनल में फर्दर वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। Here you can see diagram. The upper portion is N type and lower portion is N. This is the here the free electrons are in abundant quantity while in P-type semiconductor the holes are in abundant quantity. This N-type semiconductor is joined to the negative terminal while the P-type is joined to the positive terminal. That's why the current will flow in this direction. Current will flow just in opposite direction of electron. Means current will flow from positive to negative. Now, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है सोलर सेल? पहले डायग्राम में देख चुके हो। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो सबसे पहले हम बोल दे रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सोलर सेल में सबसे पहला पार्ट्स क्या हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है? एमिटर। ये क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बेस यूज होगा, ठीक। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे सैंडविच फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? पीएन जंक्शन। और जो सरफेस कोटेड होता है, एंटी कोटिंग होती है, कौन सी मटेरियल से होती है? वो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है, ठीक है। तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग को क्यों यूज़ करते हैं? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का हम यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं जिससे कि जो इंसिडेंट लाइट में जो एनर्जी है आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो लॉस ना हो, ठीक है। वो लॉस ना हो इसलिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का यूज़ करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज a proper metal contact made on the N type as well as P type semiconductor.
देख सकते हो सोलर सेल की वर्किंग कैसे होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ बीच में क्या है, बैक कॉन्टैक्ट। यहाँ आपको क्या करना है, बल्ब को जलाना है। बल्ब को जलाने के लिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। यहाँ से हमको सनलाइट मिली। सनलाइट सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी, देन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हुई, फिर ये होते हुए यहाँ पे फ्रंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर ये पीन जंक्शन जो डायोड है वहाँ पे वो वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं सोलर सेल के? तो जो क्रिस्टल यूज होता है उसके बिहाफ पे सोलर सेल के 3 टाइप होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टल जैसा यूज होता है उस टाइप से सोलर सेल की नेमिंग होती है। अगर क्रिस्टल मोनोक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन का मतलब एक प्योर सिलिकॉन एटम। तो प्योर सिलिकॉन जब क्रिस्टल का यूज होगा तो वो मोनोक्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। और तो सेकेंड क्रिस्टल कौन सा होता है? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल अगर यूज होगा तो ये कौन सा फिर हो जाएगा सेल? पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल सेल। तो पॉलीक्रिस्टलाइन में कौन सा सिलिकॉन होता है? बेसिकली ये होता है लिक्विड सिलिकॉन, ठीक। थर्ड वन इज amorphous silicon. Amorphous silicon was obtained by depositing silicon film on the substrate like glass plate. तो इस तरीके से 3 टाइप के हमारे हो गए सोलर सेल। पहला मटेरियल अगर मोनोक्रिस्टलाइन यूज होगा तो इसकी एफिशिएंसी 14 से 17% होगी। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा तो एफिशिएंसी 13 से 15% होगी। और अगर मटेरियल एमॉर्फस सिलिकॉन होगा तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 to 7%। Now the next one is generation of solar cell. Basically your next topic पर जनरेशन ऑफ सोलर सेल। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे सोलर सेल में, तो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल में हम बात करते हैं दैट इज सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल्स। सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल्स इसकी लिमिट होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी? दैट इज 31%। और सेकंड क्या होगा? सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। तो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 16 to 19%। मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन 14 to 15%। जो बेस्ट एफिशिएंसी वाली सोलर पावर होती है कितनी होगी? 22%। 22% क्या है? बेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। ये डेटा for the 2007 production, 87.4% of 2007 production. In this way, we covered this topic. What happens in first generation single junction silicon cells, the limit efficiency was 31%। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है दैट इज 31%। अगर सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन हम यूज करते हैं 16 to 19% एफिशिएंसी होती है। मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 14 to 15%, ठीक। और जो बेस्ट एफिशिएंसी बाई सन पावर होती है दैट इज 22%। In the case of single crystal silicon, 45.2% efficiency were given,
while the multi-crystal silicon is 42.2%. सिलिकॉन सेल एवरेज एफिशिएंसी का ग्राफ है, जो जो 4 से लेके 2010 तक इस तरीके से सिलिकॉन सेल की एवरेज एफिशिएंसी बढ़ी है। पहले 14.5, फिर 15%, फिर 15.5, 17%, 17.5%, और ये इस तरीके से जो है ग्राफ है हमारा बढ़ते हुए है।